हेलो हेलो। हम आप सभी का स्वागत करते हैं ऑन पॉकेट में पीकेएल। व्हाट अ टाइम टू हेड इनटू द प्लेऑफ्स ऑफ दिस सीजन ऑफ प्रो कबड्डी सीजन 8 में। आई थिंक इट्स द बेस्ट सीजन वीव हैड सो फार। मैं 2014 से इस लीग के साथ मैं काम कर रहा हूं एंड ऑनेस्टली आई कैन से विदाउट अ डाउट दैट दिस हैज बीन द टाइटेस्ट सीजन सो फार। लास्ट दिन तक हमारे पास तीन ही प्लेऑफ स्पॉट्स क्लोज था। We found three qualifiers for the playoffs on the last day of the league phase, and that's why it is so special. Let's take a look at the league standings, because when you take a look at the points table, ये कैसे हुआ था पहले दिन से last दिन तक? How did these 22 matches go? Which teams could have done better? Which teams narrowly missed out? Let's just give you a reminder when we take a look at the points table, क्योंकि last दिन में पुनेरी पल्टन, गुजरात जायंट्स, बेंगलुरु बुल्स, जिन्होंने खेला भी नहीं last दिन पे, they have made it through by the skin of their teeth, and a few teams certainly missing out. At the end of the day, Patna Pirates तो dominant था, 120 score difference positive, 86 points for Patna Pirates. They look like an invincible side in season 8. Dabang Delhi KC वो भी सीधा semi-finals तक अभी पहुंच गए हैं because they've got second place locked in. Then you got यूपी योद्धा. यूपी योद्धा एक साइड जैसे है कि टैलेंट है, परफॉर्मेंस है और एग्जीक्यूशन भी है, बिकॉज एवरी सीजन सिंस दे हैव एंटर्ड प्रो कबड्डी यूपी योद्धा प्लेऑफ्स पहुंच चुके हैं. सो दैट्स अ ग्रेट एफर्ट फ्रॉम देम येट अगेन. गुजरात जायंट्स विद अ विन, लास्ट टू मैचेस बैक टू बैक विंस के साथ they've qualified for the playoffs as well. Then Bengaluru Bulls, without playing a match on the last day, they got the result that they wanted and they went through as well. और फिर पुनेरी पल्टन last moment तक they weren't sure whether they would qualify, and obviously because Patna Pirates beat the side in question, that's where these guys were helped out. Haryana Steelers हार गए Patna Pirates के साथ, and that is why the Puneri Pulton side have made it through. So those are your top six. What are top six is promises to be, because इन 6 टीमों में सिर्फ 2 टीम्स चैंपियंस बन champions of season 6. And it's a good time for me to invite Aparna Jana, Dr. Aparna Jana, as well to the show, because there's so much to talk about. And when you look at the top 6, the quality is unbelievable, Aparna. और अगर हम ये next 6 के बारे में हम बात करें तो a lot of big name teams have missed out. Jaipur Pink Panthers, inaugural champions. Umba, one of the most consistent teams. फिर Haryana Steelers, who I think should have been one of the most dangerous teams. ये सारे जो teams हैं missed out on a place in the playoffs. हाँ, बिल्कुल सुहेल। एंड अगर हम इन प्लेयर्स, इन जो टीम्स जिन्होंने अभी ये आई वुड टॉक अबाउट हरियाणा स्टीलर्स ज़्यादा, क्योंकि हरियाणा स्टीलर्स के पास अपॉर्चुनिटीज थी, एक बार नहीं 2 बार। आई थिंक जब वो पुनेरी पल्टन से हारे थे, वो वही चीज थी जो उनको यहाँ पे हॉन्ट कर रही थी कि लास्ट मोमेंट पे अभी चांसेस पुनेरी पल्टन और उन्हीं के बीच में था कि कौन जीतेगा। अगर वहां पे, अगर वो पहले उस मैच में जहाँ पे लगा कि हरियाणा स्टीलर्स एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हैं, अगर वहां पे वो एफर्ट्स डाले जाते या शायद उस मैच में वो अपना बेस्ट देते, तो शायद इस मोमेंट तक आते आते उनके पास इतना वो नहीं होता कि लास्ट मोमेंट पे उनका डिसीजन होता। और बात करें जयपुर पिंक पैंथर्स की, तो जयपुर पिंक पैंथर्स भी लास्ट मोमेंट तक अटके हुए थे कि और जो 2 टीम्स हैं उनके बेसिस पे कि वो जीतेंगे, अगर वो हारते हैं तो हमारा क्वालिफिकेशन होगा। बट बंगाल वॉरियर्स के बारे में सुहेल, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, बंगाल वॉरियर्स जब वो बाहर हो गए उसके बाद उनका परफॉर्मेंस अलग निखर के आया, लाइक वो मतलब डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह खेलते हुए नजर आए। तो आपके हिसाब से वो क्या कुछ प्रेशर था उनके ऊपर या क्या रहा होगा जिस वजह से वो उनका गेम बाहर होने के बाद दिखाई दिया? Yeah, I think it's funny, Bengal Warriors के बारे में अगर हम बात करें इस सीजन के बारे में, हम ये कह सकते हैं कि द डिफेंडिंग चैंपियंस के प्रेशर वो जो है, इट वाज 100% ऑन देयर शोल्डर्स। और एक दो चेंजेस जो मिला है उस टीम के लिए, वो एक्चुअली सही चेंजेस नहीं थे. अबोजर मिघानी ऑन द राइट कॉर्नर फॉर बलदेव, आई डोंट थिंक दैट वाज अ स्मार्ट मूव. बलदेव इतना कंसिस्टेंट था पिछले सीजन में, आई थिंक दे शुड हैव स्टक विद दैट. आई थिंक डिफेंसिवली दे हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. वो जो एक स्टार्टिंग सेवन, कंसिस्टेंट स्टार्टिंग सेवन, वो नहीं था पूरे सीजन में. आई थिंक दैट्स समथिंग दैट रियली बंगाल वॉरियर्स स्ट्रगल्ड विद. लास्ट में जब प्रेशर नहीं था, they came out and played like a team that we expected them to play, and I think that's something that was disappointing for me.
फिर I think unfortunately you have to talk about the disappointment of Umba. Fazal Attarchali had a very disappointing campaign as well. So too Tamil Talaivas and Telugu Titans. Telugu Titans abhi rock bottom vapas. Tamil Talaivas I think should have done a lot because you take a look at it, six side games. I think that really was a disappointment for me. If you look at that, that's 12 points lost. अगर 12 points add करें तमिल तलाइवास को तो 59 तक आते हैं. And I think that's where the season could have been very different for Tamil Talaivas. But let's move forward. Let's take a look at the last week. Let's take a look at the key updates as well coming to this stage of the tournament because we are now entering the business end. अगर हम business end के बारे में बात करें तो we are talking about eliminators. We are talking about semi-finals. This is where the pressure starts to count on some of the biggest teams. And this is what we are talking about. The key updates entering the playoffs. These are the big talking points for me. पुनेरी पल्टन के स्पेक्टेकुलर रूट टू द प्लेऑफ्स. फॉर्म टीम वो ही है. फॉर्म टीम अगर हम बात करें तो वी हैव टू टॉक अबाउट असलम इनामदार, मोहित गोयल, सोमबीर, defenders like that who have been unbelievable to watch. Even Sanket Sawant from the other side of things is coming good. फिर पटना पायरेट्स, क्या वो invincible है? मेरे हिसाब से they are truly invincible. I think when you look at the best teams in history of Pro Kabaddi, इस सीजन का पटना पायरेट्स साइड I think they're actually one of the most invincible sides. हम अगर पहले 3 सीजन्स में देखे जाए तो यूमुम्बा के सीजन 1, 2, 3 के टीम या तो बंगाल वॉरियर्स के पिछले सीजन के टीम. But I think Patna Pirates actually are the most invincible team or one of the most invincible teams in history of Vivo Pro Kabaddi. फिर 4 टीम्स इस प्लेऑफ रेस में जिन्होंने PKL कभी भी जीते नहीं, and that is going to be a big story coming into it as well. And I just think when you look at that, you start to wonder whether we'll get a new champion. Patna Pirates, 3-time champions. You have one team in the Bengaluru Bulls who have been season 6 champions. लेकिन Dabang Delhi KC, Puneri Paltan, UP Yodha, ये जो teams है, I think they can certainly compete for top spot as well. And that's going to be really interesting to see because Puneri Paltan haven't been in a playoff race in a long time. Gujarat Giants, 2-time finalists. Can they take one step further? ये जो सवाल है, we'll receive the answers to that very, very soon. But it's going to be really interesting to see how each of these teams approach it. क्योंकि UP Yodha जो है, वो पुनेरी पल्टन के साथ खेल रहे हैं. The winner of that takes on Patna Pirates. And for me, that is going to be a great match. That semi-final, whoever takes on Patna Pirates, that's going to be a big game. And I think let's just understand what is the road to the playoffs. I think the playoff tree, कौन किसके साथ खेल रहे हैं, how are they going to make it through to the finals, who has an easy route to the final. Let's just take a look at the playoff tree coming into this season क्योंकि अभी तो लीग फेज खेल चुके हैं, लीग फेज बंद हो गए हैं. We're reaching the semi-final stages, the eliminators of the entire league. So when you look at the playoff tree overall, you have to understand that the eliminators start tomorrow. 21st of February is when the playoffs begin. And that for me is going to be Eliminator 1 and Eliminator 2. You've got Gujarat Giants and Bengaluru Bulls. Sorry for that graphic. It's actually Eliminator 2 where you've got Gujarat Giants and the Bengaluru Bulls. Eliminator 1, UP Yodha Puneri Paltan. Fifth, winner of that takes on the Patna Pirates. So UP Yodha versus Puneri Paltan. मेरे हिसाब से I think Puneri Paltan start as favorites. लेकिन Pardeep Narwal जो है, he's come back into form. 4 back-to-back Super 10s. He's got form on his side. And that could be a big factor. Winner takes on Patna Pirates. So for me, a Pune versus Patna semi-final might be a blockbuster event. Then when you look at Eliminator 2, Gujarat Giants versus Bengaluru Bulls. And the winner of that takes on Dabang Delhi. Maybe that is an easier route to the final. But there are more evenly matched teams. I think if Puneri Paltan were down at the bottom in the second eliminator, they would have an easier route. They would prefer to play Dabang Delhi. लेकिन Puneri Paltan versus Patna Pirates, वो एक semi-final है, which I think could be the biggest match heading into the final. And obviously, Patna Pirates, Dabang Delhi, they have an easy route straight through to the semi-final. They have to win only one match each. The big question is whether Naveen Kumar will be fully fit, whether Joginder Narwal will be fully fit. And that is a big question for Dabang Delhi because they have to wait to take on the winner of Gujarat Giants and the Bengaluru Bulls. Fifth, grand finale on the 25th. And that is where it is all going to come down to see whether we have a new PKL Season 8 champion. So that is the playoff tree for you. And we have to just go into what has happened
over the last week as well, क्योंकि पिछले हफ्ते में काफी सारे डिफेंडर्स, काफी सारे रेडर्स came through with very good performances. We want to talk about the overall performances of the league phase though, क्योंकि अब इसके बारे में एलिमिनेटर्स आ गए हैं, सेमीफाइनल्स आ गए हैं. It's good to look back at who are all the big names who have done a great job, and then look forward to what we can expect. So let's just take a look at the top members, raiders, defenders, teams through the entire league phase of this season. Let's just look at the Raiders first, because for me, they've had a really good run. Pawan Sarawat, Bengaluru Bulls just about made it through, and I think Pawan Sarawat, unki wajah se hi ye hua hai. Against the Haryana Steelers, he had a huge game. He had a 24-point game, 22 matches, 274 8 points for Pawan Sarawat. Aparna, single-handedly, Pawan Sarawat वापस Bengaluru Bulls को ले चुके हैं इधर. हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सुहेल। एंड अभी मैं इस टेबल को देख रही हूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि जो प्लेयर नंबर 1 पे है, उस प्लेयर और उसके बाद आने वाले जो प्लेयर्स हैं, जैसे कि अर्जुन देसवाल वो बाहर हो चुके हैं, मनिंदर वो भी बाहर हो चुके हैं, और जो चौथे नंबर पे प्लेयर है उनके बीच में करीब-करीब 90 पॉइंट्स का फर्क है। तो ये देख के तो यही लग रहा है कि इस बार पवन सरावत बेस्ट रेडर बन के ही जाएंगे इस लीग से बाहर। Yeah, I think Arjun Deshwal for me was a real star this season. वो जो जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए किया है, आई थिंक सिंगल हैंडेडली, जब दीपक निवास हुड्डा फॉर्म में नहीं थे, अर्जुन देशवाल फॉर्म में थे. जब दीपक निवास हुड्डा भी फॉर्म में वापस आके पॉइंट्स लिए, फिर भी अर्जुन देशवाल डू और डाई रेज में कुछ ना कुछ कर रहे थे. आई थिंक अर्जुन देशवाल दिस सीजन was really showing us that he is the future star of the sport in terms of Raiders. I think he will be a very smart retention for the Jaipur Pink Panthers. और वो जो कॉम्बिनेशन मिला जयपुर के लिए, दीपक निवास हुड्डा and Arjun Deshwal, they will feel like they should have made it into the top 6, and I think they will have a big disappointment. Bengal Warriors, you can understand, सिर्फ मनिंदर सिंह था और कोई नहीं था उस टीम में. सुकेश हेगड़े, no one really supporting मनिंदर सिंह. लेकिन जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए, when you have Arjun Deshwal and Deepak Niwas Hooda, there is no reason why Jaipur should not have qualified. एंड आई थिंक सुहेल, जब लास्ट के कुछ मैचेस थे उसमें दीपक का ना होना कहीं ना कहीं गुजरात को, सॉरी, जयपुर को खला है, क्योंकि जब दीपक मैट पे होते थे, चाहे दीपक उतने पॉइंट्स नहीं ले पाते थे, लेकिन उनका एक वो लीडरशिप कह लो या आप ये बोलो कि एक सपोर्ट मिल जाता था अर्जुन देसवाल को. लेकिन जब लास्ट के कुछ मैचेस में जो कि इम्पोर्टेंट थे गुजरात जयपुर के लिए, उस टाइम पे दीपक का ना होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू रहा है, जिस वजह से जयपुर यहाँ पे बाहर हुई. Yeah, exactly. I think also you look down that list, विकास कंडोला हरियाणा स्टीलर्स के लिए, उनके फॉर्म भी डिप हो गए थे लास्ट में. ही डिडंट रियली क्वाइट फाइंड द राइट कॉम्बिनेशन. उन्होंने मीतू को ट्राई किया, फिर विनय को ट्राई किया, फिर आशीष को ट्राई किया, बट वो कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठा उनके लिए. अभिषेक सिंह मुंबा के लिए प्रेशर मोमेंट्स में he was disappointing for me. Ajit Kumar for me in the pressure moments was amazing, लेकिन अभिषेक सिंह जब प्रेशर था सुपर टैकल सिचुएशन या 3 या 2 डिफेंडर के साथ, तब he was actually dropping points for Mumba, getting stuck, all out नहीं मिल रहा था. And I think that's where he needs to improve for Mumba, क्योंकि उनके पास भी एक बहुत बड़ा मौका था इस सीजन में to be a lead raider, to fly from the front. And I just think with a big price tag for Abhishek Singh, he might be put back into the auction next time and be bought back. So will be interesting to see how that goes. लेकिन अपर्णा, let's move forward to the do or die raiders, क्योंकि ये जो है एक लिस्ट जिसमें the real stars start to come out, क्योंकि pressure moments में do or die raids में किसने point लिए हैं, that is what I want to see. Mohit Goyat, look at that list. Mohit Goyat, Ajinkya Pawar, Aslam Inamdar, these 3 names really stand out for me. लेकिन Mohit Goyat 55 do or die raids, उनमें से 40 successful Aparna. Those are unbelievable numbers. एग्जैक्टली. एंड जिस तरीके से वो उनका शुरुआत में वो बहुत शाई खेल रहे थे, लाइक उनको या तो ऐसा था कि वो डर रहे थे क्योंकि उनका पहला सीजन है, और उसके बाद जो उनका परफॉर्मेंस हर मैच में उसका दिखता रहा, एक के बाद एक के बाद एक. एंड इवन लास्ट कल के मैच तक उनका परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग था. एंड गिवन दैट इट्स हिज फर्स्ट सीजन में ही वो लड़का इतना अच्छा खेलता हुआ दिखाई दे रहा है,
तो सुहेल, आप सोच सकते हैं कि आगे आने वाला फ्यूचर हमारे इंडिया का कैसा होगा। Absolutely, and also, a big word to K7 because Mohit Goyat yesterday as well before the match, Mohit Goyat ने और अनूप कुमार ने कहा कि K7 के ग्रूमिंग प्रोसेस से ही इधर तक पहुंच गए हैं। इधर से उधर K7 से ही एक प्लेटफॉर्म मिला जिसमें he was able to showcase his talent. Pune were able to pick him up as well. Amazing on Aslam Inamdar also. वो जो कॉम्बिनेशन मिला पुणे के लिए, मोहित गोयत एक साइड से, असलम इमदाद दूसरी तरफ से, what a combination. एक left raider, एक right raider. They could not have asked for a better combination of raiders to go with Nitin Tomar's leadership. फिर Arjun Deshwal. This is why I think Arjun Deshwal is actually the star raider of the season so far. क्योंकि do or die raids में भी अंश उनको ही यूज किया है. Not Deepak Hooda much as Arjun Deshwal. Deepak Nivas Hooda in 17 matches had 36 do or die raids. Arjun Deshwal 21 matches में 53 do or die raids और 39 सक्सेसफुल. फिर मनिंदर सिंह सिंगल हैंडेडली सब काम किया बंगाल वॉरियर्स के लिए. एंड पटना पायरेट्स के लिए दे टर्न टू सचिन तंवर. आई थिंक दे हैव प्रशांत कुमार राय, दे हैव गुमान सिंह, दे हैव सचिन तंवर, दे हैव मोनू गोयत. इतने सारे ऑप्शंस है पटना पायरेट्स के साथ, लेकिन सचिन तंवर हैज बीन द स्टार फॉर देम. एग्जैक्टली एंड कहीं ना कहीं आई थिंक कि उनका जो ये परफॉर्मेंस था वो स्टार्ट हुआ था जब वो नेशनल सीनियर नेशनल में खेला था उन्होंने, क्योंकि लास्ट सीजन उनका परफॉर्मेंस उतना दिखा नहीं था एंड सीनियर नेशनल में उनका परफॉर्मेंस दिखा और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको पटना ने अपनी टीम में इंक्लूड किया. और एंड देखिए अभी वो जो एक डिसीजन था पटना का सचिन को लेने का, दैट्स एक्चुअली गिविंग देम कि वो अभी लीग स्टेज पे भी टॉप कर रहे हैं और वो बहुत पहले क्वालिफाई हो चुके थे, जहां पे हम कह रहे हैं कि इस लीग में, इस पीकेएल 8 में स्पेसिफिकली कि जो टीम्स है क्वालिफाई हो रही है वो लास्ट मोमेंट तक हम डिसाइड कर रहे थे, लेकिन पटना बहुत ही पहले रिलैक्स हो चुकी थी कि हाँ हम अंदर जा चुके हैं और वो फिर भी हर मैच में लड़ रहे हैं. एंड सुहेल, अगर आपने ध्यान दिया हो, जो मैच उन्होंने दिल्ली के अगेंस्ट खेला था उन्होंने अपनी बी टीम उतारी थी, लेकिन उसमें भी Correct. उनकी बी टीम भी इतना अच्छा फाइट दे रही थी दिल्ली को कि दिल्ली स्ट्रगल कर रही थी कि क्या हम ये मैच जीत पाएंगे. आखिरी मोमेंट पे भी उन्होंने वो मैच, मतलब लास्ट मिनट तक वो मैच उन्होंने उस तरीके से लड़ा है अपनी बी टीम के साथ भी. सो यू कैन इमेजिन हाउ गुड दैट टीम इज. Yeah, and you see the team, अपना वो बैच जो आप कह रहे हैं अगेंस्ट दबंग दिल्ली, इतने सारे बेंच प्लेयर्स जो हैं, they came on, they performed. शुभम शिंदे, the young raiders जो है, it really was such a nice sight. और sideline से वो जो regular 7 starting 7 था, they were encouraging them, they were clapping from the sidelines, and that shows you that's a very healthy environment in the entire Patna team. But look, हमने raiders के बारे में बात किए हैं, do or die raiders के बारे में बात किए हैं. Let's move to the defenders because the defenders have had a really good season. और इन इस लिस्ट में भी some very very nice new names. I mean, look at the 7 here, Aparna. Sagar, हम कह सकते हैं कि फर्स्ट फुल सीजन, शार्दुल फर्स्ट सीजन, जयदीप फर्स्ट सीजन, रिंकू फर्स्ट सीजन, सुमित ठीक है, ही इज बीन देयर बिफोर. सोमवीर के लिए एक अच्छा मौका मिला पुनेरी पल्टन के साथ. 18 मैचेस खेले हैं, 57 टैकल पॉइंट्स. In the top 7, so many debutants in that list. I think this is the best season for young defenders. आई थिंक नॉट जस्ट यंग डिफेंडर्स, यंग रेडर्स एज वेल, क्योंकि अभी हमने देखा रेडर्स भी सारे यंग थे, ऐसे ही डिफेंडर्स में भी. एंड आप अगर देखें मोहम्मद रेजा को, सो ही इज जस्ट इन सेकेंड नंबर अभी और एक ही पॉइंट से पीछे है एंड सागर इज ऑलरेडी आउट. सो डू यू थिंक कि यही हमारे बेस्ट डिफेंडर ऑफ द सीजन बन के निकलेंगे इस बार? 100%. Shadlu, I thought he'll even pass Sagar in the last match. उनका जो फॉर्म है, वो टेक्निक जो है शादलू के पास, इट्स जस्ट सो डिफरेंट. वो क्राउच करते हैं वो लेफ्ट कॉर्नर में, लेकिन एक पैर आगे एक पैर पीछे, और वो डाइव करते हैं इतने आसानी से. ही इज गॉट अमेजिंग बैलेंस. फिर एंड लाइन पे ऑन हिज टोज वो ऐसे खड़े हो जाते हैं लाइक फजल यूज्ड टू डू इन 2 or 3 सीजंस अगो. सो ये जो ईरानियन फ्लेयर जो है शादलू के पास है, वो एक पोस्टर बॉय बन गए हैं पटना पायरेट्स के लिए. आई थिंक इट्स अमेजिंग टू सी एक पटना पायरेट्स डिफेंस जिसमें कोई चिंक इन द आर्मर नहीं है, कोई गैप नहीं है. नीरज, सचिन, शादलू, सुनील यादव, शुभम शिंदे जो भी है राइट कॉर्नर में, दे हैव अ रॉक सॉलिड डिफेंस. एंड आई थिंक ओवरऑल दैट इज द बेस्ट लुकिंग डिफेंस. आई थिंक 100% शादलू by the end of the season will be the top defender of the entire league.
या एंड टॉकिंग अबाउट उसके बाद रिंकू रिंकू भी एक बहुत ही यंग प्लेयर हैं। उनका भी ये Yeah, पहला सीजन है एंड जिस तरीके से उन्होंने एक बहुत ही बड़े सो उनके ऑपोजिट में उधर फजल खेलते हैं और फजल के साथ उन्होंने जो कॉम्बिनेशन ये इस लीग में दिखाया है वो आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट था एक यंग डिफेंडर के लिए भी। एंड गिवन कि वो उनका फर्स्ट सीजन है और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी और थ्रू आउट उनको पूरे सारे मैचेस खेलने को मिले, आई थिंक वो भी एक फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री में। क्योंकि मैं अगर बात करूं कि हमारे पास जो राइट कॉर्नर्स हैं वो yeah, आई थिंक पहल के बाद कोई उतना correct. खास निखर के नहीं आया है। तो हम सौरभ नंदल एंड रिंकू आई थिंक these two are the right raiders who are going sorry right defend corner defenders जो कि आगे बहुत अच्छा करेंगे हमारी कंट्री के लिए। Absolutely. I think I will add, a couple of names in that list. Sombi for me is a very impressive right corner. Sagar, of course, top defender so far. So ये चार जो right corner defenders हैं, I think they have a very bright future. Rinku, you've got Sombi, those three mainly are on that right corner. And obviously, I think going forward, इंडिया के लिए तो आई डोंट सी रविंद्र पहल प्लेइंग इन द राइट कॉर्नर. संदीप नरवाल आई डोंट नो इफ ही विल प्ले. सो एक मौका मिल जाएगा फॉर दीज गाइज एशियन गेम्स में. आई वंडर हु इंडिया विल टर्न टू इन टर्म्स ऑफ द सीनियर प्रोज on the right corner. So very good opportunity, good time for all these boys to impress as well. Saurabh Nandal also has a good opportunity. But let's look at the support defenders. जैसे हमने कहा कि do or die raids में which raiders are crucial, that's important. Support में जो आ रहे हैं defense में, their role is so important, and I think that's why you look at these men and no surprise that top 3 में दो पुनेरी पल्टन के डिफेंडर्स हैं और एक पटना पायरेट्स डिफेंडर. एंड दैट्स व्हाई फॉर मी पुणे और पटना के जो डिफेंसेस है they have been the tightest defenses. Sanket Savan और अभिनेश, amazing performances so far. 94 supports में से 74 successful, 76 में से 57 successful for अभिनेश, and then Sajin 86 में से 70. आई जस्ट थिंक पटना और पुणे के पास जो डिफेंस है बहुत कम लीक्स है. एडवांस टैकल्स तो करते हैं लेकिन नॉट मेनी अनसक्सेसफुल, नॉट मेनी ब्रैश टैकल्स. दे हैव अ लॉट ऑफ वो कंसोलिडेटेड टैकल हम बोलते हैं ना, when all defenders come together, all defenders pin down the raider. That's why for me Pune and Patna have had the best defensive units. यस ऑफ कोर्स जो उनका जो परफॉर्मेंस आ रहा है मतलब पटना का तो शुरू से ही हमें देखने को मिला था। आई थिंक पुनेरी पल्टन ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत में एंड देन उनके पास वो एक उनका जो है एक जिसे कहते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको वो लगता है कि हाँ ये खिलाएंगे ये खिलाएंगे ये खिलाएंगे एंड फाइनली वो एक उनका तैयार हो गया कि हाँ इन्हीं के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। एंड आई थिंक संकेत की हमने पहले भी ये बात करी थी कि संकेत सावंत वो टीम में है, वो शायद मेनली वो खुद से पहले टच नहीं कर रहे हैं लेकिन उनका जो सपोर्ट है वही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वहां पे टीम में परसिस्टेंटली खेल रहे हैं। उनको चाहे वो ज्यादा पॉइंट्स नहीं ले रहे हैं लेकिन उनके सपोर्ट की वजह से वो टीम के अंदर है। या एब्सोल्युटली. और फिर नीचे अगर आप देखे जाएं तो मोहित नंदल जय मोह कॉम्बिनेशन हरियाणा के लिए इतने अच्छे किया है. आई थिंक मोहित इज अ रियली ब्राइट स्टार टू वॉच. जयदीप और मोहित का जो कॉम्बिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग जो है, कम्युनिकेशन जो है, सुपर्ब टू सी ओवरऑल. और जब सुरेश एंकल होल मारते हैं तो मोहित इज द फर्स्ट मैन टू ऑलवेज अराइव ऑन द सीन उधर. फिर सुरेंद्र सिंह, हम कह सकते हैं कि बहुत पुअर सीजन था तेलुगु टाइटंस के लिए लेकिन सपोर्ट में वापस सुरेंद्र सिंह इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन द लिस्ट. वो जो उनके पास जो स्पीड है, इवन व्हेन ही वाज प्लेइंग विद फजल अतरचली एट umba, इनके जो स्पीड है फ्रॉम द कवर टू द कॉर्नर, फ्रॉम द कवर टू द ऑपोजिट कॉर्नर, it's amazing to watch. I just think he needs to hold back his talent a little bit, hold back वो जो ambitiousness है, वो जो eagerness है, he needs to just slowly dial it down a little bit. Volume को थोड़ा कम करना है उसमें, and I think he'll be a fabulous defender. But Ashu Singh for UP Yodha, yet again, good supporting defender. But Aparna, I think from support defenders, let's go to the support that Kabaddi Adda has given these young stars, because K7 में से जो Raiders और defenders आए हैं इस season में, some of these young boys, Aparna, did such a fabulous job. I mean, we've already spoken about some of them. लेकिन top K7 Raiders में Mohit Goya, top of the list. Rakesh Sangroya, what a second half of the season he has had. और फिर भरत नरेश,
जिन्होंने पवन सरावत को इतने अच्छे से सपोर्ट किया है. He came in with 106 rate points, 59.8 strike rate, very very healthy, and this makes me very proud. Aparna, पहले season of K7, पहले साल जो K7 हमने जो किए हैं, from that to have 6 guys here plus more guys like Meetu, more defenders also on the list, जिन्होंने इतने अच्छे से impress किया not just us but the top talents from across the world. Amazing to see these numbers. यस, बिल्कुल सुहेल, मोहित गोयत की तो हम बात काफी देर से कर ही रहे हैं, लेकिन राकेश सुंगरोया आई थिंक बीच में लीग स्टेज के बीच में कहीं पे ऐसा हुआ था कि गुजरात के पास और भी रेडर्स जो चल रहे आ गए थे, वो भी चलने लग गए थे. सो आई थिंक राकेश संग्रोया को कुछ दिन के लिए कोच मनप्रीत ने नहीं खिलाया था, लेकिन टुवर्ड्स द एंड अभी जो ये लास्ट मैच में उसका परफॉर्मेंस था, दैट वाज अगेन माइंड ब्लोइंग. वो ऐसा था कि मतलब Yeah. उसको इतने दिन के ब्रेक के बाद मैच के अंदर उतारा एंड देन बैंग ही गेव हिज परफॉर्मेंस की मेरे को आपने बिठाया था लेकिन मैं अभी भी अपना बेस्ट दूंगा. एंड भरत नरेश ऑफ कोर्स, जो उसकी हाइट है वो उनके लिए हमेशा प्लस पॉइंट है, क्योंकि द मोमेंट उनको कोई पकड़ता है वो बस उनको गिरना है और वो सीधा सेंटर लाइन के पास पहुंच जाते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट, it's funny, Aparna. I don't understand why Rakesh Sangroya, was rested so much by Coach Manpreet. क्योंकि उनके पास जो रेडर्स है, उस प्रदीप कुमार आई थिंक शुड बी इन द स्टार्टिंग 7. महेंद्र गणेश राजपूत फॉर्म में आके हैं, बट आई थिंक महेंद्र गणेश राजपूत, राकेश संग्रोया एंड प्रदीप कुमार, दोज आर योर टॉप 3 रेडर्स. अजय कुमार थोड़ा प्रिडिक्टेबल है, वो बोनस के लिए जाते हैं लेफ्ट कॉर्नर में और फिर टैकल उनको उधर ही मिल जाते हैं ऑपोजिशन टीम के लिए. पर आई थिंक Rakesh, you've got with Mahendra Ganesh Rajput, who uses his height advantage, Rakesh, who uses speed and a bit of real smart raiding, और फिर you have a Pardeep Kumar, जो एक rock solid raider है. That is your starting 7, I think, in terms of raiders, and I hope that Manpreet uses them when it comes to the eliminator tomorrow, and I think that's going to be crucial to see. लेकिन defenders के list में Jaideep, Rinku, what a season both of them had. Aparna, both different roles दोनों के लिए. जयदीप के लिए एक नए रोल लेफ्ट कवर, एंड वी ऑलवेज टॉक अबाउट अ लेफ्ट कवर बीइंग सच अ इन डिमांड पोजीशन प्रो कबड्डी में. व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम. आई थिंक ही वाज अ स्टार डिफेंडर इन द एंटायर सीजन अलोंगसाइड शादलू. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. सुरेंद्र नाडा के लिए वो बहुत ही अच्छे सपोर्ट रहे हैं कवर में. एंड नॉट जस्ट दैट, आई थिंक कि उनका एक स्किल है कि वो ना कवर पोजीशन से आप हर किसी को एंकल होल्ड करता हुआ नहीं देखते हैं, लेकिन जयदीप में वो स्किल है. एंड वो स्किल जो उन्होंने एक्वायर करी है उसकी वजह से उनके काफी जो टैकल्स होते हैं वो माइंड ब्लोइंग होते हैं. और उनके पास सिर्फ वो एक स्किल नहीं, उनके पास काफी सारी ऐसे स्किल्स हैं और वो हर टाइम कुछ ना कुछ अलग करते हैं. मतलब यूजुअली डिफेंडर्स तो बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं कि ये डिफेंडर तो यही करेगा, लेकिन जयदीप का ऐसा है कि उसको समझ में नहीं आता वो क्या करने वाला है. एंड आई थिंक वही एक रीजन है व्हाई ही इज डूइंग सो ग्रेट. या आई थिंक इट्स अ रियली गुड सीजन, क्योंकि मोहित के साथ जो कम्युनिकेशन भी है उनके पास, आई थिंक दैट वर्क ब्यूटिफुली. हम कहते हैं कि पिलर्स ऑफ कवर्स परवेश बेंसवाल और सुनील कुमार है, लेकिन इस सीजन आई थिंक वी हैव टू नाउ चेंज दैट. Pillars of cover is now JMO, and that is unbelievable. It's just a lock-in combination. I hope that the Haryana Steelers can keep them. Ya to they'll be picked up very quickly by some other team. Yeah, and रिंकू की हम बात कर चुके हैं. साहिल गुलिया he played throughout मैच 1 से मैच एंड तक उन्होंने सारे मैचेस खेले हैं. एंड उनका परफॉर्मेंस भी आई थिंक उनके सुरजीत की गाइडेंस में ही डिड रियली गुड. मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस. आई थिंक मैंने साहिल को यूनिवर्सिटी नेशनल्स में भी खेलते हुए देखा था, उसको मैंने K7 में भी खेलते हुए देखा था. उनका परफॉर्मेंस वहां पे था, लेकिन जिस तरीके से तमिल तलाइवाज में सुरजीत सिंह के गाइडेंस में उसका परफॉर्मेंस देखने को मिला, दैट वाज अनबिलीवेबल. जो उन्होंने वहां पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, एंड ही इज इन द टॉप list of K7 defenders. Absolutely. I just wish उनके पास थोड़ा और सपोर्ट मिला from सुरजीत सिंह. सुरजीत had a very bad second half of the season, और अगर सुरजीत का फॉर्म बेटर था तो I think साहिल गुलिया also would have better numbers. जैसे सुरेंद्र नाडा has had a good consistent season. You don't need big tackles, लेकिन अगर बहुत सारे मिस्टेक्स आ जाते हैं
फिर यू आर नॉट गोइंग टू गेट बिग नंबर्स. एंड साहिल गुलिया जैसे एक नए डिफेंडर है, when he goes for the tackle, he needs a senior man like Surjit Singh to come in and look for the block. Surjit Singh was a bit slow this season, so Sahil Gulia's numbers were not as great. But let's profile the top two men from K7, Aparna, क्योंकि रेडर्स में और डिफेंडर्स में K7 से बहुत सारे प्लेयर्स थे इस सीजन में. 25 प्लस प्लेयर्स from K7 have played in this edition of Vivo Pro Kabaddi. But Mohit Koyat, I think by the end of the season, he has become a young star who everyone across India knows his name now, Aparna. And what a season! 156 rate points, 53.2 strike rate, or do or die raids में top raider of the entire league. करेक्ट एंड आई थिंक मोहित गोयत के बारे में हम लोग K7 क्वालिफायर्स जब हरियाणा में मार्च में हुआ था, हम तब से मोहित गोयत के बारे में बात कर रहे हैं कि ये लड़का आगे जाके कुछ करेगा, आगे जाके कुछ करेगा. एंड देन जब स्टेज अप हुआ, स्टेज अप में बहुत सारे और भी ऐसे रेडर, उस टाइम पे कहीं ना कहीं ऐसा हो गया था कि कुछ लोग एक प्लेयर के बारे में बात करते थे, कुछ दूसरे प्लेयर के बारे में. लेकिन मैं एक कबड्डी अड्डा में एक मेंबर है जो कि शुरू से लेके एंड तक, जब मोहित गोयत एनवाईपी में गए तब, उससे पहले स्टेज अप में और उससे पहले क्वालिफायर्स में, हमारी टीम में सिर्फ एक मेंबर हैं जो हमेशा मोहित गोयत के बारे में बात करते हैं, वो है धन्या. आई थिंक थैंक्स टू धन्या कि उन्होंने इतनी पहले मोहित गोयत का टैलेंट आइडेंटिफाई किया एंड हमेशा उनके बारे में बात करती थी, हर चीज के बारे में कि मोहित गोयत, अगर आप मोहित गोयत को देखो, अगर आप मोहित गोयत को देखो. एंड अब पूरी दुनिया मोहित गोयत को देख रही है. Yeah, amazing. I think a big salute to Danya. I think she spotted that talent. And Mohit Goyal, very nice of him to thank K7 as well. Pre-match interview में अनूप कुमार के साथ. लेकिन डिफेंस में कौन है हमारा टॉप स्टार from K7? Only one man. Only one man. I think Suhail, you should take a sip of water. Only one man, that is Jaydeep. And Jaydeep, उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा, हम तब से जयदीप के बारे में और मोहित गोयत के बारे में बात कर ही रहे हैं. He have scored 66 tackle points in his debut season. 66 tackle points at a strike rate of 57.3. सुहेल, 57.3 स्ट्राइक रेट एक रेडर का नहीं आपको देख के ये नहीं लगता कि एक रेडर का स्ट्राइक रेट है, क्योंकि डिफेंडर्स में यूजुअली इतना अच्छा स्ट्राइक रेट दिखता नहीं है, डिफेंस में बहुत ही कम रहता है. लेकिन जयदीप, मैं पहला सीजन और पहले सीजन में उसका स्ट्राइक रेट है 57.3. दैट इज अ बिग थिंग. एंड आई डोंट नो कि कैसे जयदीप ये चीज कर पाए हैं. सो कांग्रेचुलेशन टू जयदीप बीइंग. एंड आई थिंक अपना उसके पास थोड़ा प्रेशर भी रहेगा, क्योंकि वो राकेश कुमार के साथ वो जो खेल रहे हैं, अंडर राकेश कुमार, द लेजेंड ऑफ इंडियन कबड्डी. एक तरफ सुरेंद्र नाडा, दूसरी तरफ राकेश कुमार गाइडेंस कर रहे हैं, फिर विकास कंडोला, एक यंग कवर डिफेंस कॉम्बिनेशन, फिर रवि कुमार जिसको राइट कॉर्नर पे बिठाया बिकॉज दे हैड जयदीप एंड मोहित का कॉम्बिनेशन. ये सारे प्रेशर के साथ to come in your first season and do such a good job. Amazing performance from Jaydeep. I think that's why alongside Shadlu, for me, Jaydeep and Shadlu, you can't separate the talent, क्योंकि Shadlu एक left corner है, Jaydeep एक left cover है. बहुत अलग roles ये दोनों खिलाड़ी खेले हैं, but both of them were absolutely fantastic, and therefore I think both of them without a doubt will be in the dream team of the entire league phase. Let's just look at the Dream 7. We always talk about this, Aparna. Who is going to make the Dream 7? How are you going to put this together? लेकिन मेरे लिए this has to be the Dream 7 of the league phase. No doubt about every single member. Pawan Sarawat, Maninder Singh, Arjun Deshwal, the three raiders, out and out best raiders of the entire league. You obviously have to talk about on the bench, maybe Aslam Inamdar, Yato Mohit Goyat. Also, you have to maybe have a young man like a Surinder Gill for sure impact, but also maybe someone like Naveen Kumar. But at the end of the day, Pawan, Maninder, Arjun Deshwal, those have to be the three raiders. Neeraj Kumar for me has actually been an underrated defender, Aparna. Right cover में बहुत कम mistakes किया है इस season में. Jaydeep, left cover, locked and loaded, amazing talent. Shadlu Sagar, I mean, look at this team, Aparna. I don't think any team in the league can beat them. Yes, of course, Suhail, but I have a question for you. Looking at this team,
आपको ये नहीं लग रहा कि इसमें एक चीज की कमी है कहीं पे? क्योंकि हमारे तीनों के तीनों रेडर्स आर द राइट I रेडर्स, वी डोंट हैव I लेफ्ट know. रेडर। एंड आई थिंक अगर I, इस टीम में हमारे पास विकास कंडोला होते तो इट वुड हैव बीन इवन इवन आई थिंक बैलेंस टीम, यस एग्जैक्टली। क्योंकि अभी see, for यहाँ me, पे I'll tell you या where for गो me this is my big problem also, right? In my head, I was या thinking एक लेफ्ट रेडर चाहिए. कौन है? असलम इनामदार या तो प्रदीप नरवाल या तो विकास कंडोला. प्रदीप didn't have a great season. Aslam Inamdar, yes, he was good, but how do you drop Maninder? How do you drop Arjun Deshwal? How do you drop Pawan Sarawat? Whoever you put as a right cover or a right corner, they will get you points. तो मेरे कॉन्फिडेंस ये है कि even without a left raider, these three guys are capable with their talent to still break through the best defense. And that's why for me it was very tough to not pick one of these three guys. How do you not pick Arjun, Maninder and Pavan? That for me was the big trouble, because always we're या thinking about balance, nahi? You always want to have one बिल्कुल left raider, but इस साल यस, कोई भी left raider उतना चलाया नहीं. You didn't have breakout उतना season. नहीं Yes, चला। exactly. You wanted हाँ some big numbers for either Vikas Kandola or an Aslam Inamdar or a Pardeep perhaps, or a two-sided raider like a Rahul Chaudhary. But no one really came through and had a breakout season, and that's why you can't ignore the big numbers, I think, of Arjun Deshwal, Pawan, and Maninder. What do you think? या एंड आई थिंक इस साल जो हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला है, आई एम जस्ट एडिंग ऑन टू योर पॉइंट कि रेडर्स इस बार हमें डिफेंस करते हुए भी नजर आए हैं। एंड पवन सहरावत की बात करें तो ही मेड अ रिकॉर्ड। उसने Yeah, एक ही मैच में सुपर 10 एंड हाई फाई दोनों किया। आई थिंक yeah, वो किसी उसके बाद एक मोहिती था जो कि बहुत क्लोज था ये अभी लास्ट मैच में, जहाँ पे yeah. उन्होंने Heart rate हाई point. हाई फाई Huh. किया। एंड यस 8 पॉइंट, लेकिन उनके अलावा आई थिंक दिस काइंड ऑफ क्वालिटी हैविंग रेडर हु कैन डिफेंस एज वेल, आई Yeah, थिंक इट्स अ ग्रेट क्वालिटी। एंड ये चीज पहले इंडियन प्लेयर्स में कुछ अब से पहले जो सीजन yeah. गए हैं वहां पे हमें नहीं दिख रहे थे, लेकिन You know, इस बार हम हमें हम वो चीज दिखी है। हम वही कहते हैं ना कि टोटल कबड्डी इरानियंस के पास जो है, टोटल कबड्डी 360 कबड्डी हम कहते हैं इसको. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम, यूर राइट, इस सीजन में हम ये देखे हैं कि दिस टाइम फॉर श्योर टीम्स आर कमिंग विद अ स्ट्रैटेजी ऑफ सेइंग हम कैसे ये कर सकते हैं टोटल कबड्डी, कैसे हम रेडर्स को भी डिफेंस में सपोर्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं. एंड आई थिंक दैट्स रियली अ वैल्यूएबल लेसन, बिकॉज ईरान यूज टोटल कबड्डी टू बीट इंडिया एट द एशियन गेम्स. And I think now in an Asian Games year, India is worried. And I think this is a good sign that India is taking lessons from Iran in some sense and saying, ठीक है, हम भी खेलेंगे टोटल कबड्डी. And you saw it. कल जो पटना पायरेट्स के लिए मोनू गोयत ने किया है, he was moving from right in to left in based on who the Haryana Steelers raider was. और उधर ही यस ankle hold, ankle hold, ankle hold. भरत नरेश जो किया है इस सीजन में, I think a lot of raiders are practicing the ankle hold. मोहित गोयत, असलम इनामदार, सुरेंद्र गिल, वो जो है डाइव करते हैं टाई होल्ड के लिए. So different raiders have करेक्ट। different styles of trying to bring in a defensive point also. And I think for Indian kabaddi, that's a superb thing. एंड इवन मैंने अभी कोचेस कॉर्नर में सुना था, अनूप कुमार अपनी टीम में मोहित गोयत को बोल रहे थे, उन्होंने डिफेंडर्स में किसी को नहीं बोला, उन्होंने बोला डिफेंडर्स में कोई नहीं जाएगा, मोहित Correct. एंकल होल्ड करेगा एंड इसके एंकल होल्ड परफेक्ट होने के बाद सब सपोर्ट करने जाएंगे। सो उस काइंड वो जो तरीके का जो कॉन्फिडेंस एक कोच अपने रेडर्स में दिखा रहा है कि आप डिफेंड करेंगे, कोई और Yeah, डिफेंस में नहीं जाएगा, दैट इज अ बिग थिंग कि रेडर्स पे वो उस तरीके का कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है कि आप डिफेंस में जाएंगे। यूजुअली हम नहीं देखते हैं कि कोचेस ये correct. चीज रेडर्स को बोल रहे होते हैं कि आप जाइए। लाइक आई थिंक 2 मैचेस पहले की बात है जब रणधीर सर ने ये बात बोली कि Yeah, पवन तू नहीं जाएगा, उनको जाने दे, तू रेड पे पॉइंट लाएगा, मुझे पता है, बस तू correct. अगर जाएगा तो आउट मत होना। तो Yeah, वो चीज अभी भी हर कोच के अंदर वो चीज नहीं आई है कि आप उतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रेडर्स को देंगे, लेकिन फिर भी नए रेडर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि अगर वो दोनों ही चीजें करेंगे, रेडिंग एंड डिफेंस, तो उनको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी टीम में। एंड yeah.
इतना कंपटीशन है, तो उनको टीम में रहना है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई वो हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं। रेडर्स होने के बाद भी वो डिफेंस ट्राई करते हैं, एंड उसमें वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं उस तरीके से। या अपर्णा, हर हफ्ते बहुत सारे फैंस आके बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो गाइस, whoever's watching, the entire fans of kabaddi, all the audience members, please send in your questions now in the comments, and we're going to now start taking all the fans Q&A. And I think let's start with the question from Dhanya. Why didn't Patna Pirates rest its players in the last match? This is a really good question because I have two answers, Aparna. आई मेरे हैव हिसाब वन। से, या सो मेरे हिसाब से दो आंसर्स है। एक, दे डोंट वांट टू फेस हरियाणा इन द प्लेऑफ्स। हरियाणा एक थ्रेट है पटना के लिए। दे सी हरियाणा एज वन ऑफ द फ्यू थ्रेटनिंग टीम्स टू द पटना पायरेट्स। कल देख लेना, बिकॉज व्हेन यू लुक एट अ फुल स्ट्रेंथ पटना टीम, they just beat Haryana Steelers. So Patna knew that beating Haryana and sending Haryana out of the playoff race was very important. दूसरी चीज ये है कि राम मेहर एंड ऑफ कोर्स who else? Rakesh Kumar. Think back to when Rakesh was at Patna Pirates. Rakesh spent only half a season at Patna Pirates, and फिर he was removed from Patna Pirates. He left the Patna Pirates halfway through the season, and then he joined Mumba the next season. Obviously, there is also still some tension between Rammeer Singh and, of course, Rakesh Kumar. Healthy tension, you have to say, also competitive tension. Rakesh was so disappointed after Haryana lost yesterday, but main reason मेरे लिए ये है कि Patna did not want a threatening team like Haryana to qualify, because that is one of the few teams I think that can beat the Patna Pirates. What about your opinion? And I think adding to your, I agree both the points of yours. I think third would be कि जो पटना पायरेट्स है वो उससे पहले एक मैच हारे थे, एंड नेक्स्ट उनका होगा एलिमिनेटर वन से जो भी जीत के आएंगे, तो वो नहीं चाहेंगे कि वो बैक टू बैक दो हार के साथ वहां पे सेमीफाइनल खेले। आई थिंक इसलिए उन्होंने Correct. अपनी मेन टीम उतारी ताकि उनके पास वो एक मोमेंटम रहे जीत का, एंड देन वो वहां पे सेमीफाइनल्स खेले। तो प्लेयर्स के लिए भी एक वो माइंडसेट रहता है कि अच्छा मैं जीत कर आया हूँ, मैं आगे भी जीतूंगा, राइट। अगर Yeah. वो रेस्ट कर देते तो वो मोमेंटम भी कहीं ना कहीं खो जाता, क्योंकि वो दो मैच बैक टू बैक रेस्ट पे रह जाते। करेक्ट, एंड आई थिंक वी टॉक अबाउट इट अ लॉट अपना। इस शो में भी हमने कहा कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में मोमेंटम इज अ बिग वर्ड, एंड ये जो विनिंग हैबिट है वो कैरी करना चाहिए, एंड आई थिंक देव क्रिएटेड दिस हैबिट ऑफ विनिंग that they wanted to carry into the playoffs, into the semis, and I think that's a very good move from Ram Meher Singh from Patna Pirates. एक मैच में जिसमें कुछ नहीं था उनके लिए, they were celebrating big moments. Amazing to see. Next question coming in from Atharva Chorikar. Why did you Mumbai and Haryana Steelers slip at the end of the season? They were in top 6. Very good question. I think both these teams, I think it's a brand of kabaddi. You Mumbai के लिए and Haryana के लिए दो अलग चीज है। You Mumbai के लिए I think back to the first game, यू मुंबा वर्सेस बेंगलुरु बुल्स। पहले 10 सेकंड में पवन सरावत को इतने अच्छे से टैकल किया था, अग्रेसिव टैकल के साथ। फिर उसके बाद दे कंटिन्यू दैट फॉर द फर्स्ट 5 to 6 मैचेस, फर्स्ट इवन 10 मैचेस आई वुड से, अग्रेसिव डिफेंडिंग। दैट इज वेयर यू मुंबा इज मोस्ट लीथल। उसके बाद जो है लास्ट 6 to 7 मैचेस, यू मुंबा स्टार्टेड प्लेइंग लिटिल बिट पैसिव कबड्डी, उतना अग्रेसिव कबड्डी नहीं खेले थे। And with Rinku, with Rahul Setpal, with Fazal there, with Harinder there, they should have gone aggressive with their defensive, because that is when you Mumbai is most dangerous. Kal bhi sirf I think 6 या 7 defensive points liye you Mumbai ne, and I don't think that is the you Mumbai of old. Whenever you think of you Mumbai, you think of rock solid defenders, Surendra Nada, Mohit Chiller, Jivar, Vishal Mane, फिर उसके बाद संदीप नरवाल, फजल अतरा चली, अटैकिंग डिफेंस। इस सीजन में भी रिंकू और फजल ने जो पहले किए हैं और फिर राहुल सेठमाल ने जो किए थे, that is the aggressive brand of defense that you expect from you Mumbai. We did not get that, and I think that's why you Mumbai bowed out. Haryana Steelers, Aparna, I'll let you take this question and I'll add to it at the end also. हरियाणा स्टीलर्स एक्चुअली लास्ट मोमेंट तक आई वाज थिंकिंग कि हरियाणा स्टीलर्स क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन उनका जो आई थिंक कल के मैच में एंड उसके पहले के जो 2 मैचेस उन्होंने खेले थे, एक मैं बात करूंगी, हाँ, एक मैं बात करूंगी पुनेरी पल्टन के अगेंस्ट जो उन्होंने मैच खेला था उसकी। दूसरा मैं बात करूंगी जो जिस मैच में आई थिंक इट वाज अगेंस्ट दिल्ली, Yeah, Delhi or Gujarat. Yeah, I remember which one. गुजरात, सॉरी गुजरात, या इट वाज अगेंस्ट गुजरात, जहां पे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाए थे। तो Correct. वो जो था कि
रेडर्स उनके कहीं न कहीं कल के मैच में भी रेडर्स चलते हुए उतना नज़र नहीं आए थे। या एंड पुणे के अगेंस्ट तो रेडर्स बिल्कुल भी नहीं चले थे, बैक टू बैक बस ऑल आउट हो रही थी उनकी टीम। तो वहीं आई थिंक अगर वहां पे वो मैच जीत गए होते तो शायद या हरियाणा कल क्वालिफाई कर चुकी होती। तो बिल्कुल। वो मैच था जहाँ पे वो बाहर हुए हैं। एंड आई थिंक हम लोगों ने ये बात पहले भी करी थी कि कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जहाँ पे वो एक एक पॉइंट की वजह से हम टीम उस टाइम पे नहीं इतना ध्यान देती कि एक पॉइंट जा रहा है या कितने पॉइंट जा रहे हैं, लेकिन जब हम लीग स्टेज खत्म करके बाहर जा रहे होते हैं उस टाइम पे हमें रियलाइज होता है कि अगर हम वो मैच जीत चुके होते तो यू नो शायद हम यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते। मैं एक्चुअली उस मैच के लिए मैं कमेंट्री बॉक्स में था और ऑन एयर मैंने कहा कि दिस इज द मैच दैट हरियाणा विल लुक बैक ऑन एंड थिंक इधर हमारे सीजन तो यू नो it's gone, it's यही खत्म lost हुआ है। because हाँ, they knew that after that उसके बाद जो था मैच वो पटना पायरेट्स के साथ थे, and I think that's where करेक्ट, they started to understand. So very different problems. यू मुंबा के लिए डिफेंसिव प्रॉब्लम्स, पैसिव डिफेंडिंग, हरियाणा के लिए पैसिव रेडिंग, and I think that's where the whole season changed for both those teams. Romeo is asking Arjun nahi, Naveen Kumar या Manjeet. Oh, I don't think so. I think it has to be Arjun in the top 7, in the dream 7. Naveen Kumar had a good season लेकिन इंजरी की वजह से he had a stop start season. अभी भी करेक्ट। I don't know whether we'll see the best of Naveen Kumar in the semi final as well. Manjeet, I can't say that Manjeet had a better season than Arjun Deshwal. Yes, Tamil Talaiwas के लिए वो एक लोन वॉरियर था, पर आई डोंट थिंक ही हैड अ बेटर सीजन देन अर्जुन देशवाल. क्वालिटी से, नंबर्स से, आई थिंक अर्जुन देशवाल डेफिनेटली वाज हेड एंड शोल्डर्स अबव देम. अपर्णा, योर एंड थॉट? आई थिंक नवीन की इंजरी की अगर हम बात करें तो अभी जिस तरीके से आई थिंक हैट्स ऑफ टू दबंग दिल्ली, जब नवीन बाहर हैं तब भी उनकी टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। उन्होंने पटना पायरेट्स की बी टीम जो कि ऑलरेडी एक बहुत बी टीम बेशक वो थी लेकिन वो फुल फाइट दे रही थी, एंड या उस टीम को भी उन्होंने बहुत अच्छा कंपटीशन दिया। हालांकि पटना पायरेट्स बहुत मार्जिन से वो मैच हारे थे, लेकिन फिर भी दबंग दिल्ली के यंग प्लेयर्स एंड आई थिंक मंजीत चिल्लर का रोल वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि सीजन के शुरुआत में ही वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ एरर्स, बार बार या गलतियां करते हुए नजर आए थे। लेकिन आई थिंक मंजीत चिल्लर का परफॉर्मेंस उस टाइम पे दिखाई दिया जब एक्चुअली वो मैटर कर रहा था। नवीन ने रेडिंग में उतना कुछ चल नहीं रहा था और डिफेंस में उन्होंने डिफेंस को उस तरीके से कंट्रोल करके चलाया था। तो नवीन का या ना होना टीम में दिल्ली के लिए बहुत खला है, लेकिन दबंग दिल्ली उसको उससे सिर्फ एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं हो सकते, राइट? तो उस चीज से हटके वो बाहर आए हैं। सो आई थिंक नवीन का ना होना दिल्ली के लिए आगे भी थोड़ा तो मुश्किल होगा। देखते हैं कि आगे सेमीफाइनल्स में और फाइनल्स तक अगर जाते हैं तो नवीन वापस आएंगे या नहीं मैच पे। Yeah, that's going to be an interesting one. Question coming from Kaushal. Do you think Bengaluru Bulls have a chance to win this season? Kaushal, good question. I think it's going to be interesting because Bengaluru Bulls first play Gujarat. I think they can win that match. लेकिन उसके बाद जो मैच है, that is going to be the big one because I think Bengaluru Bulls have an easier route to the final. If Bengaluru beat Gujarat, Bengaluru versus Delhi, Bengaluru still have a chance. So I think Bengaluru Bulls need to win, remember, 3 in a row to become champions. But I just think Bengaluru versus Patna will target Pawan. और पवन के अलावा इस टीम में हाउ डू यू से इट इन अ नाइस वे, बहुत स्ट्रेंथ तो नहीं है. भरत नरेश है टीम में लेकिन ही इज नॉट गोइंग टू विन योर फाइनल. इफ यू हैव वन मैन टू विन योर फाइनल, दैट इज पवन सरावत. I just think Patna Pirates have too strong a defense to allow Pawan Sarawat to have a great season. But if Puneri Paltan beat Patna or if UP Yodha beat Patna in the semi, then I think Bengaluru Bulls have a very good बेंगलुरु chance. बुल्स के चांसेस हैं। हाँ, Exactly. So एंड I ऑल्सो think if Bulls play Patna, I don't think Bengaluru Bulls have a chance because they would have also played 2 matches by then. But if they play anybody else, Bengaluru has a chance. यस यस एंड आई Your thought, थिंक Aparna? सुहेल, या कंप्लीटली एग्री टू यू। आई थिंक सुहेल की बेंगलुरु बुल्स का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं पवन के परफॉर्मेंस से कोरिलेट कर रहा है कि जब भी पवन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तभी ऐसा कुछ होता है कि बुल्स या तो बहुत ही मार्जिन से जीत रहे हैं और या फिर नहीं जीत रहे हैं।
So Yeah, it's directly proportional to Pawan's performance, and I think correct. अब पवन को सब क्रैक कर चुके हैं ऑलरेडी डिफेंस में कि किस तरीके से पवन को रोकना है. Next And question next coming from question, SK. Yeah, who's who's your your favorite favorite team and team player? and who Aparna, you are want to out start of first? the playoff? Who's my favorite player? Okay, favorite player I can say favorite player is Maninder, and Yeah, he's my favorite player since really long time. जब वो defending champion जब थे पहले से, and who's my favorite team who's who's out yeah. the playoff. Out of the Okay, playoff. I think I would say Haryana Steelers. I think Haryana Steelers इस सीजन का अगर हम बात करें तो इज अ रियली ग्रेट टीम टू हैव, जहाँ पे इतने सारे रेडर्स हैं, इतने सारे डिफेंडर्स हैं, ऑल आर परफॉर्मिंग वेल. Yeah. तो हरियाणा I स्टीलर्स आई थिंक was one of the good teams which I feel would have been in playoffs. I really feel for them. See, Aparna, we don't agree very often sometimes on the show, but this time I'm going to agree with you 100%. For me as well, my favorite team who is not in the playoffs is Haryana Steelers. I think उनके पास जो एक complete team जो है, they just lacked one raider. They just lacked a consistent raiding unit. Yeah. Formation थोड़ा नहीं बैठा ठीक से, and I think that's the only reason they didn't make it. So for me, Haryana Steelers are the team that I think are my favorites who are not in the playoffs. And if you talk about the players, two players for me come to mind. One is Jaideep from Haryana Steelers. I think Jaideep for me is my favorite player of the season who is not in the playoffs. I think in the left cover debutant of the season for me has to be Jaideep as well, left cover region mein. So for me, Jaideep is my favorite player who's not there. But I also think Raiders mein Arjun Deshwal and Maninder, these two players I think should have had a really big role to play. They didn't have the support, maybe, but those two men are also there. But for me, Jaideep and Haryana Steelers are my favorite team and player who are not there. So maybe time for us to wrap things up, Aparna. We'll take one more question, maybe from Danya. Didn't Puneri Paltan inspire a lot of fans? Yeah, I think they certainly inspired a lot of fans. I think they inspired themselves because for a team, let's think about Puneri Paltan. पहले जो 3-4 सीजन्स थे प्रो कबड्डी में, this is a team that traditionally has struggled for a long time. Apart from maybe one season, Puneri Paltan has really been one of the strugglers of Pro Kabaddi, like the Telugu Titans, like Dabang Delhi used to be. So for this season, to find emerging stars, not Rahul Chaudhary, not Nitin Tomar, to find Aslam Inamdar, to find Mohit Goyar, to find a Sanket Sawant, or Abhinesh Nadarajan, that for me is why Pune's performance this season has been very inspirational. एंड आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी, उसके बाद हर मैच उनके लिए डू और डाई मैच था, राइट? एंड उसी तरीके Yeah, से वो खेलते हुए आए, एंड उसके बाद एक वो जीत 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 टाई जीत, और अगर लूज भी कर रहे हैं तो बहुत ही कम मार्जिन से कर रहे हैं. सो दैट वाज अ थिंग. एंड आई थिंक उनको एक बार तो डराया बंगाल वॉरियर्स ने, जो बंगाल yeah. वॉरियर्स से जो मैच वो हारे थे. बट आई एंड लास्ट मोमेंट तक भी वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट था उनका कि हरियाणा स्टीलर्स या वो. तो या पुणे के लिए इट इज समथिंग कमिंग राइजिंग सडनली फ्रॉम नोवेयर. Yeah, 100%. Another question coming from Arvind. Is it fair to say Patna, UP, and Pune are in the tougher half rather than Dabang, Delhi, Gujarat, and Bulls? I agree. And that's why I think actually the Bulls have an easier path to the final. Patna, UP, and Pune are actually, I would say, the three high quality teams under pressure. Patna under pressure, Pune under pressure, UP with Pardeep Narwal in a big game. These are going to be the teams to watch. Delhi, Gujarat, yes, a lot of quality. लेकिन match winners अगर हम बात करें तो Bulls have the match winner. That is Pawan Sehrawat. So I think definitely it's fair to say that Patna, UP, and Pune, the upper half of the road to the playoffs, is the tougher half of the playoff tree heading to the finals. Delhi is the only team who qualified with the negative score difference. What's your Yeah. opinion on that? My opinion SK. on that is actually the fact that they got more wins. At the end of the day, when you talk Yeah. about wins, that is important. Many other teams had many ties. They had many, many ties, and therefore it didn't look so bad. And
इनकी वजह से स्कोर डिफरेंस केम इन टू प्ले. लेकिन अगर आप हर मैच जीत के जाते हैं, then you don't need to look at the score difference only. And even when Naveen Kumar was not there, Aparna, आपने कहा थोड़ी देर पहले, when Naveen was not there, they had a Vijay Malik scoring back-to-back super tens. They had a Sandeep Narwal scoring points for them. And I think that's And even where the new Dabang will. K7 player also, Manjeet, who Correct, came into the correct. mat and suddenly everyone were like, who's this Manjeet, right? Yeah, yeah. Okay, Another so question there is coming in. from Venkateshwaran Subramanyam, very long name. What is the main reason that Bengal Warriors did not qualify for the playoffs even though they were favorites? I think कि उनका defense. Okay, you want to answer? Yeah, please. No, I was just going to say one word, Aparna. Defense. And you took it. So please continue. या यस आई थिंक उनका डिफेंस कहीं ना कहीं नहीं चला जे कुछ मैचेस में मतलब उनकी डिफेंस में काफी वेरिएशंस मुझे मिली शुरुआत Correct. में वो लोग काफी एडवांस खेल रहे थे लाइक दे वर गोइंग रैंडमली एंड होल टीम यूज टू गो पूरी टीम इकट्ठे चले जाते थे और वो बाहर चले जा रहे थे फिर उसके बाद वो थोड़ा रुक के खेलने लगे जब रुक के खेलने लगे तब उनके स्टेप आउट्स बहुत ज्यादा हो रहे थे आई थिंक Correct. दोनों ही कॉर्नर पे हमें स्टेप आउट्स और अगर मैं बात करूं उनके टीम में अमित नरवाल जो कि Yeah. बहुत गलतियां भी कर रहे थे लेकिन ही वाज द ओनली प्लेयर इन देयर टीम हु वाज एक्चुअली इन दैट पोजीशन हु वाज एक्चुअली प्लेइंग वेल Yeah. तो uh, उनका डिफेंस आई थिंक एक प्रॉब्लम था और मनिंदर को कोई सपोर्ट नहीं मिला And रेडिंग हम कहते हैं कि विराट कोहली के इंडियन टीम में बहुत सारे अगर चेंजेस हर मैच के बाद चेंजेस करते हैं ना, एंड द टीम डिडंट हैव कंसिस्टेंसी. समटाइम्स दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द प्रॉब्लम वाज विद बंगाल वॉरियर्स, डिफेंडिंग चैंपियंस, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं मिला. एवरी मैच दे वर चॉपिंग एंड चेंजिंग द टीम, चेंजिंग द स्टार्टिंग सेवन, एंड सो प्लेयर्स को भी कॉन्फिडेंस नहीं मिलते. हर मैच के बाद या प्लेयर्स सोचेंगे कि अरे यार मैंने क्या किया, इतना गलती क्यों किया. एंड फिर अगर मैं एक मूव रॉन्ग करते हैं तो आई एम गोइंग टू बी ड्रॉप नेक्स्ट मैच. सो ये आ जाते हैं माइंडसेट में, एंड आई थिंक दैट्स बीन द प्रॉब्लम फॉर एंड आई बंगाल थिंक वॉरियर्स. उसकी वजह से प्लेयर्स कुछ बच के भी खेलते हैं कुछ प्लेयर्स होते हैं जो आई थिंक थ्रू आउट वो मैट पे रहते हैं लेकिन वो अटेम्प्ट ही नहीं या करते हैं कि अगर मैंने गलती करी तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा या राइट एंड नाइस नेक्स्ट नाइस क्वेश्चन क्वेश्चन कमिंग कमिंग. फ्रॉम अथर्वा या वेरी नाइस क्वेश्चन व्हिच प्लेयर विल बी पार्ट ऑफ इंडियन टीम इन एशियन गेम्स 2022 सुहेल Yeah, I can tell you which players should be there. I don't know which players will be there. But I think the one thing that I think we'll see, Aparna, is एक change होएगा from past to future. Past में जो हमने देखा है कि reputation पे teams चुन के जाते हैं. This time form पे जाएगा. I think you'll see a lot of young या players. Naveen Kumar will be there. Arjun Deshwal will be there. I think Pawan will be there. I think Maninder Singh should be there as well. तो ये जो Raiders हैं, they will certainly be there, and I think we'll see some youngsters. Whether it's a Mohit या Goyad, whether it's an Aslam Nandar, whether it's a Vikas Kandola, it is yet to be seen. But defense में, I hope we will see some young men. I hope there's a Jaydeep. I hope maybe there's a Sunil Kumar and Parvesh. Who knows, right? But I think we will see a young team going to the Asian Games this time, and I hope there will be a young team going as well. या there is a next question coming up from Malav. I think I pronounced it right. Yeah. Sir, Gujarat played brilliant after so many injuries. Yeah, they had so many injuries. I think जब वो शुरुआत में आए थे तो उनका जो मेन रेडर था सोनू जागलान ही वाज इंजर्ड तो वो बाहर था एंड पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने एक यंग रेडर को दी एंड देन वो यंग रेडर जो है वो भी बहुत अच्छा खेलता हुआ आया एंड देन उन्होंने अजय को उनको उनको अजय मिला उनको प्रदीप मिला तो आई थिंक या दे हैड लॉट ऑफ इंजरीज एंड स्टिल दे प्लेड रियली वेल सो या कंप्लीटली करेक्ट मालव. Yeah, good question. And finally, from Ashwin, is PKL 8 the most exciting and tight season? 100%. Ashwin, I have been part of PKL since season 1. मुझे अभी भी याद है 26 जुलाई 2014 जब पहले मैच हुए थे NSCI Dome में between Jaipur and Mumbai. From then to now, I've been a part of every first match and every last match of every season. And till date, I think this is the most
amazing season yet. Last दिन तक लीग फेज में सिर्फ दो टीम्स थे in the playoff race. फिर तीन टीम्स यूपी योद्धा भी पहुंच गए थे. But we had three teams who locked their place on the last day. And I think that tells me that it is the most closely fought league, not just Kabaddi mein, but in any sport in recent history. या एंड आई थिंक लास्ट सीजन की अगर बात करें तो लास्ट सीजन में जो प्लेयर्स के बीच में जो पॉइंट सॉरी टीम्स के बीच में जो पॉइंट डिफरेंस था वो काफी ज्यादा था. टॉप 6th एंड 7th में ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स का डिफरेंस था, लेकिन इस बार इट इज जस्ट 3-4 पॉइंट्स. एंड आई थिंक वो एक रीजन है व्हाई दिस सीजन इज सो एक्साइटिंग. Yeah, I think definitely exciting season, or I hope all of you have enjoyed Pocket May PKL. Let's just take a one last look at the road to the playoffs and what to expect 21st, 23rd, or 25th पे. This is what it's all about. UP Yodha versus Pureri Paltan Eliminator 1 में, Eliminator 2 में गुजरात versus Bengaluru Bulls. फिर उन दोनों मैचेस में जो जीतते हैं, they will go through to the semi-finals to take on the Patna Pirates and Dabang Delhi. Or फिर on the 25th of February, it will be the grand finale. I cannot wait for that match as well. I don't know what to predict, Aparna. I think it's going to be tough to see anybody beating Patna. But I think the top half of the draw, UP, Puneri Paltan, Patna Pirates, I think, in my opinion, champion उधर से मिल जाएगा. एंड आई वाज अबाउट टू आस्क यू कि आपके हिसाब से, इट्स अ डिफिकल्ट ट्रिकी क्वेश्चन, कौन होगा फाइनल्स में जो पटना को फेस करेगा? क्योंकि पटना, वी आर ऑलरेडी सेइंग दैट इट्स अ स्ट्रॉन्ग टीम एंड वो तो फाइनल्स तक जाएगा ही. बट आपके हिसाब से पटना के अगेंस्ट कौन होगा फाइनल्स में, अगर पटना जाती है तो? अगर पटना जाते हैं तो हाँ, because I just think there is an opportunity for a team like Patna to have one bad day. It's still possible. I think it's Yeah. very difficult, but it is still possible. लेकिन अगर पटना पहुंच जाते हैं फाइनल में, I actually think it's between the Bulls and Dabang Delhi, because in a big game, प्रेशर मैच में यू नीड वन इंडिविजुअल ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, और वो पवन Yeah. सरावत दे सकते हैं. आई थिंक पवन सरावत Correct. या तो नवीन कुमार, दे कैन गिव इट. दबंग दिल्ली आई थिंक हैज अ गुड टीम, बिकॉज फाइनल्स में बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं. संदीप नरवाल, जोगिंदर, मंजीत, नवीन कुमार, जो प्रेशर नहीं लेते हैं. विजय, he also has a cool head on his shoulder. So Dabang Delhi versus Bengaluru Bulls could be an amazing semi-final in the build-up to the grand finale. Yeah. So I think that it was a great chat, सुहेल. पॉकेट में पीकेएल, जहाँ पे हमने इस लास्ट वीक के बारे में बात करी, हमने पूरे लीग स्टेज के बारे में बात करी कि कैसा शुरुआत से लेके एंड तक कौन सी टीम कैसा खेले और कौन से प्लेयर कैसा खेले. एंड वी हैड रियली गुड क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम आवर व्यूअर्स. एंड ऑन दैट नोट, आई वुड लाइक टू say thank you everyone for being with us and watching the show, and हमें इतने अच्छे अच्छे questions पूछने के लिए. Thank you so much everyone. Thank you so much, Suhail. Thank you, Aparna. I just want to say a big thank you also to our production team. Let's just thank our program director, our creative head, a lot of guys who put a lot of work into what you see, the graphics, the show itself, the content creators, and a lot of others that go behind the scenes as well and do a lot of work at Kabaddi Adda to bring you all of this content. हमारे पास अभी 4,000 नहीं, 400,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर है YouTube पे. Our Instagram family is growing as well. So please continue to subscribe, continue to like and follow all of our pages. Aparna, thank you for joining us, Pocket Mein PKL Mein, and to all of you who have joined us as well, thank you very much. We will see you soon, and I will see you from the commentary box in the playoffs and the eliminators too. So see you soon.